દક્ષિણ ગુજરાત કોળી સમાજ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કમોસમી વરસાદથી થયેલા ડાંગરના પાકના નુકસાન અંગે ગુજરાત સરકારને રાહત સહાય માટેની ભલામણ બાબતે ગુરુવારે કામરેજ 4 રસ્તાથી રેલી આધારે નીકળી સુરત કલેક્ટરાલયે પહોંચી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને જણાવાયું હતું કે ડાંગરના પાકને થયેલા નુકસાન માટે તાત્કાલિક સહાય ખેડૂતોને અપાય તો આવેદનપત્ર આપવા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો સમાજના આગેવાનો જોડાયા હતા તો ખેડૂત આગેવાન ઉમેશ પટેલે વધુ માહિતી આપી હતી। मेरा नाम उमेश पटेल दक्षिण गुजरात कोड़ी समाज अग्रणी। आज हम लोग सूरत कलेक्टर साहब को दक्षिण गुजरात कोली समाज के खेडूत भाइयों अन्य खेडूत भाइयों को खेती के अंदर जो कपास डांगर शेरडी सागभाजी में जो कमौसमी बारिश हुई है उसमें जो नुकसान हुआ है तो सरकार श्री को हम रजूआत करने के लिए आए हैं कि ये नुकसान की राहत हमारे खेडूत भाइयों को मिले। कितने खेडूत समाज आपके साथ हैं? हमारे साथ दक्षिण गुजरात के भरूच अंकलेश्वर से लेके वलसाड़ वापी तक के खेडूत हमारे साथ है। यहाँ पे कितने लोग आए? यहाँ पे फिलहाल खेडूत लोगों की संख्या आने की चालू हो चुकी है। अभी फिलहाल 25-30 खेडूत आ चुके हैं। आपने कल भी रजूआत की थी, क्या था कल रजूआत में भी यही था कि खेडूत को जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे और राहत दे। कौन कौन खेडूत है?